Hello dear student, I am Varun Kumar Nishant from LPM Public School. In this video, we are discussed about the Mendeleev's periodic table. Dear student, we are discuss about the chapter 5, that is periodic classification of element. In this video, we are discussed about the Mendeleev periodic table. So, Mendeleev's periodic table. This was given by Russian scientist, Russian chemist Dmitry Ivanovich Mendeleev. In 1869, he arranged the element with certain principle, certain aspect. First, he arranged element in their increasing atomic mass. Their increasing atomic mass. Increasing atomic mass. First, he took hydrogen and oxygen and react with all elements that are those on that time, all elements to form their compound, that is oxide and hydride and oxide. Third, he arranged element into groups and period. He left some gap in their periodic table. For future discovered element. So these are the important aspect, important achievement of Mendeleev.
let's take one example of their increasing atomic mass. Increasing atomic mass, that is, if you see in the page number 85, near about, I think page number 83, if you see in the NCERT chapter 5, that is Mendeleev periodic table, if you recognize the page number 83, in page number 83, if you examine, if you see, you will find increasing atomic mass. The atomic mass of Ficoni, that is iron, cobalt and nickel. So iron atomic mass, that is 55.85, cobalt atomic mass, that is 58.93, and nickel atomic mass 58.71. So arranged in a very micro level, increasing atomic mass, there is a slight difference between the cobalt and nickel atomic mass, but he preference given the preference about increasing atomic mass. Cobalt atomic mass is slightly less than nickel atomic mass. That's why he represent the, and in that time also, if you examine your model periodic table, you will find that the arrangement of element, that is these transition metals, these are also Mendeleev also arrange this element into their transition series on that time of Mendeleev. So Ficoni, that is iron, cobalt and nickel, are also seen in that time the model periodic table long form, that is 55, 58, 59, 58.71, are arranged in same manner. 26, that is iron, 27, that is cobalt, 28, that is nickel, also in that time of long form of periodic table. So he took a descriptive level, micro level studied about this, and he won great achievement of the studying of arrangement of the periodic table, and he took the hydrogen and oxygen and for the study of chemical properties, studies of chemical and physical properties. ये जो उन्होंने कंपाउंड बनाया था ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, फॉर्म देयर कंपाउंड, दैट इज हाइड्राइड एंड ऑक्साइड. किसके लिए बनाया था? फॉर द केमिकल प्रॉपर्टी, स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करने के बाद, और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर भी थी, कभी देखते हैं. Next, that is hydrogen, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and this is the gap of transition series. If you see in the model periodic table, this is a group 1, group 2, group 3 and group 4, group 5, group 6, group 7 and group 8 that are given in the. तो group 7 जो है वो डील करता है ट्रांजिशन सीरीज. लिथियम के बाद क्या है? सोडियम,
उसके बाद मैग्नीशियम, आज के डेट में भी मैग्नीशियम है। उसके बाद बोरॉन के नीचे क्या है, एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर एंड देन क्लोरीन। देखते हैं और भी सारे एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन पीरियड में यहाँ पे फीकोनी रखा हुआ था, फीकोनी, दैट इज आयरन, कोबाल्ट, निकल। निकल नहीं है, निकल। देखिए सिमिलर प्रॉपर्टीज, जो सिमिलर प्रॉपर्टी के सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी जो शो कर रहे थे वो एक ही ग्रुप में थे। जैसे आज के डेट में अभी देखिए यहाँ पे +1 है, इसका भी +1 होता है, इसका भी +1 होता है। These all their group 1 elements, also potassium is also included. Potassium, rubidium, cesium, इन जितने भी ये एलिमेंट है ग्रुप 1 के, सब में +1 की कैटेगरी आएगी, बट +1 में +1 की वैलेंसी इनकी होगी। और इनमें जो ये लिथियम और मैग्नीशियम का जो रिलेशनशिप होता है, लिथियम का मैग्नीशियम का रिलेशनशिप क्या होता है कि लिथियम की जो साइज होती है, जो अगर सपोज दैट यहां हम मानते हैं कि लिथियम की साइज, एटॉमिक रेडियस की साइज, एटम की रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, अगर एटॉमिक रेडियाई मान लीजिए, एटॉमिक की साइज मतलब मान लीजिए यहाँ पे 0.74 एंगस्ट्रॉम है, तो मैग्नीशियम का भी 0.74 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये जो रिलेशनशिप है किसी दूसरे पीरियड के, मान लीजिए फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड पीरियड में जो अरेंजमेंट है, अब उस अरेंजमेंट के बावजूद भी कुछ सिमिलरिटीज गेन हो रही हैं दूसरे ग्रुप के, दूसरे पीरियड के एलिमेंट से, इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप ये जो है डिफरेंट एलिमेंट, इसका वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी +2 होती है। दे आर स्लाइटली डिफरेंस बट दे आर टोटली सिमिलर इन देयर समथिंग, सम ऑस्पेक्ट लाइक एटॉमिक रेडियाई, चार्ज, not about this charge. This is the valency. Diagonal and relationship. Diagonal relationship, that is equal to some in the reference of atomic radii and the relative charge. Relative charge. Also, beryllium is also similar to, boron is also similar to that. And this similarity is between two different elements is called diagonal relationship. So this is also an achievement of Mendeleev, Dmitry Ivanovich Mendeleev, that is was Russian chemist, Russian scientist. So that's why this is the achievement of Mendeleev, and some limitations of Mendeleev has been discussed in the next video. Thank you.